everyone, Vinita this side. I hope you all are fit and fine. So after completing a little bit introduction of the chapter Rain on the Roof, now we are going to start with the NCERT reading of the same chapter, the same poem Rain on the Roof. So from the title of the poem Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. The poet is telling us about the memories he has of the rain, the sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. The poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like tears shed by the sad, dark night. He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. So I hope you will understand something like in Rain on the Roof जो poem है वो अपने घर की छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज पर जो कवि है जो पोएट है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो देता है। वो कहते हैं कि रात में जब बारिश की बूंदें अंधेरी रात हो जाती है ना, जब रात बिल्कुल अंधेरी हो जाती है तो वो आंसू बहाती है, तो वो जो आंसू बहाती है ना वो बारिश के रूप में गिरते हैं। वो बिस्तर पर लेटना, अपने कमरे की छत पर बारिश को गिरते हुए सुनना उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे उसके पास्ट की कुछ बहुत ही स्वीट मेमोरीज जो है ना वो उसके पास आ जाती हैं। वो कहते हैं कि बारिश की बूंदों की आवाज उसे सोने नहीं देती, उसे सोने में मदद करती है और उसे मीठे मीठे सपने देती है, और स्पेशली वो सपने जो उसको अपनी माँ की ज़्यादा याद दिलाते हैं कि उसकी माँ उसे बचपन में रात को जैसे सुलाती थी उसको वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा याद आती हैं। So I hope you will understand this. So nextly, come back to the chapter. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब बादल आसमान में जो घने काले बादल है ना वो बिल्कुल घिर जाते हैं, बिल्कुल स्काई को कवर कर लेते हैं, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी बारिश की कोमल मुलायम बूंदों की पटर पटर पटपट की आवाज को कभी सुना है? What thoughts, अगर सुना है, then what thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? तो कौन से ऐसे विचार हैं जो आपके दिल में, आपके दिमाग में आते हैं एज जब आप सुनते हो मेलोडी ऑफ नेचर, नेचर की वो मेलोडियस साउंड को जब आप सुनते हो तो किस तरह के विचार आपके मन में जो है वो आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इस कविता को पढ़ो जानने के लिए कि एक्चुअल में जो पोएट है क्या स्वप्न लेता है, क्या सोचता है, क्या विचार, क्या थॉट्स फ्लैश्ड होते हैं उसके माइंड में जब वो बारिश की बूंदों की आवाज को अपनी छत पर गिरते हुए सुनता है। So here we do have the first stanza. Okay, so we do have the first stanza. When the humid
shadows hover over all the starry spaces, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the pitter of the soft rain overhead. So, first of all, this stanza don't have any type of rhyming scheme, rhyming words, and so that we can say it free versa. So, when the humid shadows hover. So, here we do have some words that we need to find out the exact meaning of that. So, firstly, we do have humid. Humid means something which is full of moisture. Something which is full of moisture. Shadows. Shadows means dark clouds which cast a shadow on the earth. Hover, move around something like mandrana. Melancholy, sadness, udasi. Bliss, sukh, happiness. Petal, this is the sound of raindrops falling on the roof. Cottage chamber means bedroom. So in this stanza, when the humid shadows hover all over the starry spheres, it means the poet is saying that when the humid shadows means dark clouds which are full of water, जब dark clouds ह्यूमिड मीन्स नमी से भरे हुए यानी कि गीले यानी कि पानी से भरे हुए जब पानी से भरे हुए काले घनघोर बादल हो मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टेरी स्पेसेस क्योंकि नाइट का टाइम है स्टार्स होते हैं और वो जो स्टार्स होते हैं जब बादल आ जाते हैं ना स्काई में तो वो क्या होते हैं छुप जाते हैं यानी कि जब बादल मंडराना शुरू करते हैं ना तो वो कहाँ कहाँ पे फैल जाते हैं जहां जहां पर जो स्टार्स होते हैं ना वो होते हैं वहां वहां पे वो काले बादल आ जाते हैं एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं नाइट की कि रात में जो रोशनी होती है खुद का प्रकाश तो सिर्फ स्टार्स का होता है बिकॉज जो मून है उसका खुद की उसके पास खुद की लाइट तो है नहीं तो मेनली जो स्काई में रोशनी होती है जो लाइट होती है ओनली फॉर बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ स्टार्स अब स्टार्स के ऊपर अगर बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं क्लाउड्स उसको कवर कर लेते हैं तो डार्कनेस हो जाती है अब डार्कनेस जब होती है ना तो पॉइंट यहाँ पर इस बात का कंपैरिजन कर रहा है कि नाइट जब बिल्कुल डार्कनेस से भर जाती है ना जब बिल्कुल अंधेरे से भर जाती है तो वो अपनी डार्कनेस में आने की पोजीशन की वजह से बहुत उदास फील करती है बहुत सैड फील करती है और जब वो बहुत सैड फील करती है ना तो वो धीरे धीरे क्या करती है रोना स्टार्ट कर देती है तो उसके जो आंसू है ना वो बारिश के रूप में धरती पे गिरते हैं What a bliss to press the pillow. To press the pillow. अब पिल्लो को दबाना मतलब उसको दबाना नहीं उसको प्रेस करना यानी कि उसको मोड़ना या उसको दबाना नहीं है मीन्स टू से लेटना क्योंकि जब हम लेटते हैं पिल्लो पे तो पिल्लो अपने आप थोड़ा सा प्रेस हो जाता है ना तो उसको बोला गया सो व्हाट अ ब्लिस कितना सुख मिलता है टू प्रेस द पिल्लो उस बेड पर लेटने पर अब वो बेड कहाँ है और वो कॉटेज चैम्बर बेड उसके बेडरूम मतलब अपने बेडरूम में पिल्लो के पर लेटना पिल्लो लेकर लेटना कितना ब्लिसफुल एनवायरनमेंट है कितना सुखदायक है परम सुख है एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड एंड लाई लिसनिंग और लेटे लेटे सुनना द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड कोमल मुलायम बारिश का ऊपर गिरना और उसकी आवाज को उसकी पटपट को सुनने में अपने बेडरूम में लेटते हुए उस चीज को सुनना इट वाज रियली अ वेरी ब्लिसफुल मोमेंट so I hope you will understand that the poet actually
wants to say that the poet is saying that when the humid shadows hover, means dark clouds which are full of water. So the poet is saying that when the sky is full of these clouds, which are laden, which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain. When such clouds hover around in the sky, overall the starry spheres refers to the sky at night time, which is full of stars. So at that time, huge clouds which are full of moisture move around the sky, and sad darkness of the night is wept off by the raindrops, और वो अपनी उदासी को दूर करने की कोशिश करता है, अपनी उदासी को खत्म करने की कोशिश करता है। किससे? आंसुओं से। जैसे हम लोग कब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है जब हम थोड़ा सा रो लेते हैं। सो सेम थिंग हैपेंड विद द पोएट आल्सो। सो sad darkness of the night is wiped off by the raindrops, which seem like tears falling from the sky. The poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as if it is crying, and the raindrops are tears shed by it. He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room, means cottage chamber, and listen to the sound made by raindrops falling on the roof. I hope you will understand this. So, nextly, according to the second stanza, what is actually given here, like every tinkle on the shingles, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Means, first of all, before started with the explanation, here we do have some words that meaning is very important to understand. Like firstly, tinkle. Tinkle is a short and light ringing sound. लाइट रिंगिंग साउंड समझते हो? बिजली कड़कती है ना, जब वो आवाज के साथ साथ लाइट भी दिखाई देती है। Shingles, rectangular wooden tiles used on roofs. Shingles वो टाइल्स होती हैं जो हम नॉर्मली रूफ पे अपने घर की छतों पर लगाते हैं। Echo, repeated sound, means to say गूंज। Woof, the thread woven across the loom, वो धागा जो कुछ भी बुनते हुए हमें जिसकी जरूरत होती है उसको वूफ बोलते हैं। Putter, the sound of raindrops falling on the roof. Busy being refers to the human beings, and here the poet is referring to himself. Busy being मतलब human beings होते हैं, बट यहाँ पर busy being जो है उसने poet ने खुद के लिए यूज किया। So let's start with the translation. Like every tinkle on the shingles, उन टाइल्स पे पड़ी हुई बूंदों की जो आवाज है, has an echo in the heart, वो दिल में एक गूंज बना देती है। And a thousand dreamy fancies, और हजारों तरह की कल्पनाएं, हजारों तरह की स्वप्न में ली गई कल्पनाएं into busy being start, कि उन बूंदों के गिरने से जब हम उसको बहुत आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे उस आवाज को सुनते हैं तो हमारे दिल में उसके लिए गूंज बनती है, और उस गूंज से बिजी बीइंग यानी कि जो ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन पर्सनालिटी है, उनके साथ क्या है कि वो ऑलवेज एंड ऑलवेज दे आर ऑन द ड्यूटी,
either they are in the office, in the business, or in the family. So every time we all are very busy being, but उस बिजी रूटीन से हटकर जब हम बैठते हैं कुछ भी इस तरह से बहुत ही नॉर्मल हर चीज को इम्प्रूव कराने की, तो वहां पर जो बिजी बीइंग होता है यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स जिनके पास अपने कंप्लीट दिनचर्या के अलावा बिल्कुल भी समय नहीं है, वो बिजी बीइंग में स्टार्ट हो जाती हैं उस अपने काम को छोड़ के, वो जो कल्पनाएं हैं ना, वो उनकी कल्पनाएं उनके दिल में बननी शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस होती है मेमोरीज, और बहुत सी हजारों यादें weave their air threads into woof, बुनना शुरू कर देती हैं एयर थ्रेड्स, हवा में धागों से बुनना शुरू कर देते हैं। उधेड़ बुन चलती है, मतलब वो धागे जो है वो विचारों के हमारे माइंड में चलते रहते हैं कलेक्शंस को लेकर। एज आई लिसन टू द पिटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जैसे मैं उस पटर पटर की पटपट की आवाज को सुनता हूँ, तो अपने आप ही बहुत सारी यादें मेरे मन में जो है ना वो उधेड़ बुन करती रहती है। So I hope you will understand this, that what actually poet wants to express. The poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house, and he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart in the sense of echo like goonj. He has many different fanciful imagination. He adds that the sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. He recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. So he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new beliefs in the mind, and the memories of the past come back in form of dreams only. So I hope you will understand this, that what the poet actually want to express. Okay, now come at the last stanza. Now in the memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played on this upon the singles by the patter of the rain. Means now in memories comes my mother. अब जो वो यादें उसके माइंड में जो उधेड़ बुन जो विचार चल रहे हैं, अब उसमें याद आ जाती है उसको अपनी मदर की, अपनी मम्मा की, as she used in years agone, जो बहुत साल पहले की बात, कुछ यादें जो थी उसके माइंड में आई, to regard the darling dreamers, to regard the darling dreamers, अरे she left them till the dawn, वो छोड़ देगी शाम तक, मतलब जो करना है उसको वो करा देगी। Oh, I feel her fond look on me as I list to his platform, to this refrain. Oh, I feel fond look on me. मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मुझे बहुत ध्यान से देखती थी। As I list to this refrain, जब भी मैं इस गीत को, यानी कि जब भी मैं इन साउंड्स को सुनता हूँ ना, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ जो है वो देख रही हैं। Which is played upon the singles, वो उस गीत की बात कर रहा है, उस आवाज की बात कर रहा है,
जो हमारे सिंगल्स पे आई। ओके, सो द सॉन्ग विच इज प्लेड ऑन द सिंगल्स, जो सिंगल्स पे पानी की रेन ड्रॉप्स जो गिर रही है ना, बूंदे जो गिर रही हैं, उससे जो म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ना, सो अकॉर्डिंगली वो जो है जब बारिश की बूंदों पर वो जो गीत गूंजता है ना, वो गीत जब सुनाई देता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है कि जैसे मेरी मदर जो है वो मेरी तरफ देख रहे हैं। विच इज प्लेड बाय द पेटर ऑफ द रेन, और रेन ऑन द रूफ जो है, बाय द पेटर। अब जो है वो गीत बज रहा है, वो गीत चल रहा है, वो गीत कहाँ से चल रहा है? एक तो वो सिंगल्स पे बज रहे हैं, और वहां बज रहे हैं जहां पर जो बारिश है ना उसकी आवाज है। मीन्स here the poet introduce his mother। यहाँ पर जो पोइट है, जो कवि है, पॉट्स किने, वो एक्चुअल में अपनी मदर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। he says that he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past। So it is the memory of his past, of his mother, who is no longer alive, and in the past she used to love him and lot she used to love with a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as the as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of the house, of the room, and the round of music, the sound of rain makes. So at the place of blank need to be give something. So the sound of music, the sound of rain makes him corroborate his past with his present. Of course it will be. And the sound of rain makes him correlate his past with his present। उस बारिश की बूंदों से उसने प्रेजेंट के साथ साथ अपने पास्ट को भी महसूस किया। दैट इज वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑफ द सिंगल्स ऑफ हिज हाउस। सो कोरिलेट करने के लिए दैट्स वाई द पोएट इज मूव्ड टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल्स ऑफ हिज रूम। तभी उसने, जो पोएट है, उसने कहा कि जो बारिश की बूंदे हैं ना, वो हम अपने सिंगल्स पर महसूस करके उसकी आवाज को सुन लेंगे। whenever he does not। So according to that, that's why the poet is moved by the sound of raindrops of snuggled have brown. So the sound of rain makes him correlate his past with his present। कि present में रहते हुए उसने अपने past की सभी memories को जो याद किया। That was also a very big thing। So whenever he hears the sound is bring back memories of the past, and he is reminded this number। I hope you will understand। I already explained the complete uh, literary devices, the complete figure of speech of this chapter. So I think you will understand this। Okay, so now अब उसकी जो मम्मा की आवाज आती है, एंड
उसमें क्या होता है, वो बहुत पुराने टाइम की जो याद है ना उसके माइंड में ताजा हो जाती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन स्वप्न में ले जाने का जो श्रेय है, शी लेफ्ट देम, उसने शाम तक उस चीज को किया कंप्लीट। एंड आई फील वेरी फॉन्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा, लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जो मेरी जो है वो मेन, वी कैन से दैट I listen to this refrain to feel her fond look on him, look on me, look on her, which is played उस refrain की, उस गाने की जो शिंकल्स पे पानी की बूंदों के गिरने से बचता है, by the patter of the rain, बारिश की बूंदों की पटपट से. So already we have done the literary devices, I think. So you need to be learn that. And what is the actual meaning of patter? Patter means the sound of raindrops falling on the shingles of the roof. Okay, so I think you will understand this carefully. So in next video, we will come with the question answers and complete summary of the chapter. So thank you. Have a nice day.